The Muslims are facing existential threat in India, but internationally they are trying to label Pakistan as a sponsor of terrorism. बड़ी बड़ी धमकियां और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान में घुस के मारना है. Our threats to have a war with Pakistan will be the last battle of Modi regime. This will end in a political death of Modi. This will disintegrate India. This will be the last map you're going to see as a union of India. Pakistan जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान भर में देखने वाले सभी व्यूअर्स को आज हम एक बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आए हैं अपने टेलीविज़न के ज़रिए. और हमारे एक मेहमान हैं जो कि दुनिया भर में जिद्दोजहद कर रहे हैं ओप्रेस नेशन के लिए, जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं. जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं भारत में सिखों के ख़िलाफ़, जनाब गुरपंत सिंह पन्नू जी, सिख फॉर जस्टिस, एवरीबडी नोज. सो सर वेलकम आपको करते हैं. हाँ फरूकी साहब, थानू भी ते पाकिस्तान दे सारे भैन भरावां नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. गुरपंत जी, आप बताएंगे कि इस वक्त बड़ा तनाव का एक सिचुएशन चल रही है पूरे इंडिया और पाकिस्तान में, और बड़ी बड़ी धमकियां और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान में घुस के मारना है. इंडियन आर्मी क्या ये कर पाएगी? देखो, ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, they are surviving on Hindutva agenda and they are surviving on a massacre of Muslims. The Muslims are facing existential threat in India, but internationally they are trying to label Pakistan as a sponsor of terrorism ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਤਫਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ, ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਏ. ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਗੇਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ political power is everything. But I want to say something, that the threats to attack Pakistan or threats to have a war with Pakistan will be the last battle of Modi regime. This will end in a political death of Modi. This will disintegrate India. This will be the last map you're going to see as a union of India, because the new nations are going to be born out of this war if Modi continues with his threats and if they attack Pakistan. तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर उसने पाकिस्तान पे मैली नजर डाली? Yes, you can mark my word that this will be the last Union of India map you are going to see on the world globe. If they attack Pakistan, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ. ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, only then they will be able to attack, and we will make sure that this will lead to disintegration of India. This will lead to the independence of Khalistan, and the road to the independence of Kashmir runs through Khalistan. This will disintegrate Union of India into multiple pieces. गुरपंत जी, ये बताइएगा कि आपके इंडियन आर्मी में तो एक बड़ी नंबर्स ऑफ सिख जो है उसमें सिपाही हैं, तो उनका क्या रोल रहेगा फिर? देखो, we have already sent this message. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ the Indian system that is responsible for the successive genocide of Sikhs from 1950 till now. And I can assure you, with the new generation of Sikh soldiers from Punjab in the Indian army, they will not fire a bullet towards Pakistan. Rather, they will defend the lands of Punjab right now. They will liberate Punjab from the Indian occupation. तो वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली नजर डाली? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ onus is on the Pakistan army and Pakistan government.
We are ready to sacrifice ourselves. We are ready to defend. We are ready to liberate Punjab. But we need the backing of the Punjab India. We need the backing of the Pakistan government to counter India's narrative. We need the backing of the Pakistan army to defend Punjab, to liberate Punjab, and to fight the Indian army. एंड हाउ फार डू यू सी कि ये जो आपकी लिबरेशन है ये कितनी दूर रह गई, ये मंजिल कितनी दूर है आपकी अब? देखो ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ. He knows, he has written the fate. But I can assure you 2047, whether this war happens or this war doesn't happen, whether 2047 you will not find a union of India on the global map. And this is because of the Hindutva ideology of BJP's and Mr. Modi. That is one part. It's Okay. not only Modi's Hindutva ideology that is going to lead the disintegration. It is from 1950 when they have a constitution in which they have labeled Sikhs as Hindus. It is the successive genocides of the Sikhs and the econocide of the Punjab that will lead, and that will be the stepping stone for the disintegration of India, leading to the other independent nations from Union of India. पन्नू जी बताइएगा कि जो ये इंडिया का एक रोल है टेररिज्म में आउटसाइड ऑफ द इंडिया विच इज लाइक इन कनाडा एंड यूएसए एंड यूके, इसको आप कैसा देखते हैं? क्योंकि ये बाहर उनके एजेंट आके मार के चले जाते हैं और दुनिया में भी उनकी बदनामी हो रही है. हाउ डू यू सी दैट? That was a part of the whole Narendra Modi's plan कि वो पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ they will try to blame Pakistan as a sponsor of terrorism, but they have failed it miserably because we have challenged their narrative diplomatically. We have challenged their narrative openly, and no one in the world, no country believes India because they are being investigated. Indian government, Narendra Modi, is being investigated for sending their assassins in Canada, trying to assassinate me in America, trying to assassinate our core referendum organizer in UK, Paramjit Singh Pamma. So they have already been exposed and they have been labeled as the exporters of the international terrorism. और वो पहलगाम जैसे ड्रामे करके और पुलवामा जैसे ड्रामे करके वो ब्लेम जो है पाकिस्तान पे लगाते हैं, जो हर बार उनका नाकाम हो जाता है. देखो पहलगाम is an issue that needs to be investigated, and that comes from the Pakistan government, that they have been targeted, they have been labeled within 10 minutes. So how do you label a country within 10 minutes of an attack? 1 hour attack chalda paya, but the social media accounts are saying कि पाकिस्तान ने कीता है. 1 hour they couldn't send their army, police officials or medical aid, and the people were, and the Hindus were dying at that time. Where did they disappear? Because it was the Indian proxies, it was done by the Indian army, just like what they did in 2000. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, then the responsibility is for the Pakistan government that they should hold a international press conference openly and ask for a UN-backed and American-backed investigation and show us the proof. Nobody should be taking a blame, or nobody should be coming and saying eh assi nahi kita ji. Like, it's not like that tusi nahi kita. This is an Indian narrative. This is the Indian media that is blaming Pakistan. There is no evidence. ठीक. तो पाकिस्तान वासी जो आपकी ये बात सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान बहन भाई आपकी बात सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या आप उनको एक मैसेज देंगे इस वक्त? You know, the message is that India is an existential threat to the people of Pakistan, and Pakistan is facing an existential threat because of Narendra Modi's government. Our objective and what we have stated, if the India goes through this threat, that will be the last battle of Modi, and this will be a political death for the Modi, and the Union of India will be disintegrated. There will be new nations born, and the first will be Khalistan, and there will not be a Union of India map ever on the globe again. Well, thank you so much, पन्नू जी, आपने टाइम दिया. Pakistan Zindabad, Khalistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद.